मतलब जो भी शेयर हो रहा है आज मेरे मुंह से, मेरा तो क्या, इट्स गुरुजी's लाइफ, गुरुजी's बॉडी, गुरुजी's सोल। तो जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और उसमें जो भी ब्लेसिंग्स है, मेडिसिन है, हीलिंग है, आंसर्स हैं, गाइडेंस हैं, वो उन संगत के लिए हैं जिनको आज गुरुजी ने भेजा है। आप यहाँ हैं इस सत्संग में, जो भी आप सुन रहे हैं वो गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। तो मैं अपना पूरा सत्संग जैसे स्टार्ट टू फिनिश मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे, मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, वो तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए आज जो भी गुरुजी शेयर करवाना चाह रहे हैं, जो मैसेजेस हैं, जो लर्निंग्स हैं, उस पे फोकस ज्यादा आ रहा है। सो वन बिग मैसेज हैज बीन कॉन्स्टेंटली शुक्राना एंड फॉरगिवनेस एंड मर्जी। तो इन मैसेजेस पे सारा ध्यान वहीं जा रहा है, तो यही गुरुजी की मर्जी है। I'll share with the most recent experience. मैं recently अभी सिंगापुर में थी, also by Guruji's grace. Very last minute मेरा passport was expiring soon. It was not possible to get the visa by from our parts. हमें जो हाथ पैर चलाने थे, सबमिट किया एप्लीकेशन के लिए, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, हमने हेल्प के लिए मैसेज किया, सब कुछ किया अपनी तरफ से। मैंने लेट इट गो एंड गुरुजी की मर्जी से आगे जो दरवाजे खुल गए, got the paperwork in time, और मैं जा पाई to be with my sister and her family at a tough time. तो वहाँ एक संगत है जो बहुत टाइम से कह रही थी कि अच्छा योर सिस्टर्स कमिंग, मुझे आप दोनों सिस्टर्स के साथ एक सत्संग शेयर करना है, बट आई विल शेयर इट व्हेन शी कम्स, आई शेयर इट वंस एंड फॉर ऑल विद बोथ ऑफ यू एक साथ। तो वो एज इट टर्न आउट, बहुत दिनों हमने सोचा कि इस दिन मिलेंगे, कॉफी पे मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं एक फ्राइडे को निकल रही थी, वेडनेसडे तक वी ट्राई टू मीट, नहीं हो पाया। थर्सडे सुबह मैं बैठी थी गुरुजी के पास और मुझे थॉट आया गुरुजी आज थर्सडे है, तो सत्संग होता है, नॉर्मली आई वुड अटेंड द सत्संग ऑन थर्सडे इवनिंग्स which has been the case for many years. Thursday गुरु का दिन होता है, तो Thursday evenings को usually I used to go to satsang in Seattle and then in New York. मैंने कहा इवनिंग तो आज नहीं हो पाएगा, इट्स द लास्ट नाइट विद फैमिली, बट आई विश आई कुड बी इन सत्संग विद यू। तो सुबह आई जस्ट प्लेड अ शब्द, जो भी शब्द मन में आ रहा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल। आप देखिए, वी हैव अ स्लाइट डिजायर टू बी विद गुरुजी एंड गुरुजी मेक्स अ होल ब्रिज फॉर अस टू क्रॉस, फॉर अस टू रीच गुरुजी। एक शब्द हो गया, एंड एज इट टर्न्ड आउट दिस संगत आंटी वाज एबल टू कम दैट मॉर्निंग एंड शी वाज एबल टू कम टू द हाउस। शी सेड नहीं, मैं बाहर नहीं मिलूंगी, मैं घर पे ही मिलूंगी। So of course we had tried प्रसाद, तो एक फ्रूट प्रसाद का भोग हो गया, एंड सब कुछ जैसे सत्संग होता है वैसे ही हुआ। इट्स नॉट रिचुअलिस्टिक एंड रिजिड कि हम बैठे, हमने शब्द सुना, फिर हमने ऐसे किया। तो इट वाज फास्ट एंड प्रैक्टिकल। तो मेरा मन था शब्द सत्संग में बैठने का, तो आई सैट विद द शब्द एंड देन आंटी केम एंड whoever was there, me, my sister and my brother-in-law's mother, we were all able to listen to Auntie's satsang and have the prasad. And उस सत्संग में उन्होंने बहुत सारी deep चीजें शेयर की, including about going through a lot of pain as part of Guruji's grace and blessings, and then getting great blessings also. So her faith is so strong and so anchored. वो काफी बार तभी होता है after we have experienced a lot of pain and loss, when we know that the only thing which is real and eternal bliss is God and is Guru's light. तो वो जब हाथ पकड़ लेते हैं, there's nothing left to fear. So she said that she had asked Guruji कि Guruji surrender क्या होता है? मुझे Google वाला मीनिंग नहीं चाहिए कि this is the literal meaning of surrender. असली surrender क्या होता है? And Guruji ने उनको सिखाया कि गुरु surrender होता है हुक्म मानना। तो that struck me really deeply. Hukum, that is a command, that is God's will, that is God's wish. और मानना, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, कि हम ना मांगे, because if you think about it, अगर हम मांग रहे हैं, not only are we thinking with our limited brain and our limited sight and this limited lifetime कि अभी मुझे ये चाहिए. As we all know, when we buy a pair of new clothes, soon it becomes old and it doesn't make us happy anymore.
तो ऐसे जो भी हमारे डिजायर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस लाते हैं. वी गेट द थिंग वी वांट, देन वी वांट द नेक्स्ट थिंग. तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत ही ब्रीफ होता है. सो मांगो नहीं, मनो. मांगने से वी आर ऑल्सो टेलिंग गॉड what God should do. But that doesn't make any sense. God should tell us what to do, which is the mano part. और हमें immediately गुरु जी की बात मान लेनी चाहिए. So when she said hukum mano, that struck me so deeply. I just thought about it all day and days and weeks after that. And मैं किसी और दिन जा रही थी गाड़ी में, and I was thinking about this. I was thinking हुकुम मानो. It doesn't just mean कि हम accept करें कि गुरुजी का ये decision था, but maybe we are not happy with it, so we accept it with a heavy heart. या कहते हैं चलो not happy with that, but गुरुजी की mercy. But that's not what I think it means. I thought to myself कि this means कि आप गुरुजी के हुक्म को खुशी से accept करो, that you celebrate his decision, because इतना faith है that we understand that Guruji's decision would bring us the most happiness. Life is not meant, I don't believe, because Guruji सारी blessings end करते थे with ऐश कर, जायश कर, कल्याण पिता. अगर गुरु ने किसी का कल्याण किया है और कहा है कि let's focus on कल्याण, अगर गुरु ने कहा है किसी का कल्याण किया है, how could you possibly be sad? So the point of life is not to be sad, but जो sadnesses आती हैं, जो difficulties आती हैं, वो हमारा karmic balance होता है जो हमें pay off करना होता है. But if we do it, मतलब with a lot of resistance, so we are not able to pay that debt off with the kind of faith and courage जो गुरुजी हमें दे रहे हैं. So if we are able to accept those parts of life and move through them with sadness, perhaps there are tears, but with grace कि जो हो रहा है for the ultimate good हो रहा है, which is moksha, which is reconnection with our own divinity, with Guruji, with God, कि हम हमारी human life और human sufferings and even human happiness dissolve हो जाए और eternal bliss मिल जाए, which is to be just merged with the divine light. If that is truly जो असली चीज होती है, गुरुजी कहते थे मुझसे कोई असली चीज नहीं मांगता. लोग अपने मटेरियल डिजायर्स में रह जाते हैं. यहाँ पे इतने लोग आते हैं बट असली चीज कोई नहीं मांगता. एंड दैट संगत आस्क्ड कि गुरुजी असली चीज क्या होती है? He said नाम. सो गॉड्स नेम. अगर हम रब से रब को मांग ले, हमने सब कुछ मांग लिया और सब कुछ ले लिया, और वो मना भी नहीं कर सकते बिकॉज गुरुजी होल हार्टेडली जेनरसली सबको देते थे जो भी हम मांगते थे. तो rather than asking for something which is ultimately not good for us or this short term happiness, हम अगर रब से रब को मांग लें, नाम मांग लें, वो कनेक्शन मांग लें, डिवाइन कनेक्शन, that is eternal. You must have heard in another auntie संगत कि जब उनका एन वक्त आया, when she couldn't breathe and she reached out to her husband and her children and everybody कि ऑक्सीजन लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इनको बुलाओ, कोई नहीं हेल्प कर पाया. And when she just remembered Guruji and took out his picture and just thought of Guruji, उनको सांस आ गई. So that is असली Guruji. तो सांस कौन ले सकता है? Only God. So Guruji can do anything. Guruji can give anything. Guruji can give life. Guruji ने खुद एक और संगत अंकल के थ्रू बताया था कि वो पहले लाइफ देते हैं. So अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व नहीं हो रही है, वो कर्म काटनी है. So patience is the other half of the equation of faith. तो उसके लिए we need to have a lot of faith and a lot of patience. And that same part of it is positivity. अगर faith है और अगर patience है, then we would accept things in a true ऐश करो, that we are living our life as happily as possible while going through whatever we are going through. I know that what I'm saying is not easy, and if I had not seen and been through a lot of it, I wouldn't say it. लेकिन ये सब गुरुजी के हाथ में. Whatever Guruji wants to happen. When my mom got very very sick, आप सबको उनका सत्संग पता ही होगा, when she was in a near death state for nearly 3 weeks on life support. But the minute I heard the news, immediately एक Monday morning था, the minute I got the phone call from my father कि ऐसा ऐसा हो रहा है, she's admitted to the ICU, she can't breathe.
I was about to start my Monday morning satsang with Guruji, and the shabad that started playing on its own without me playing it, ऐसा भी बहुत बारी होता है. गुरुजी के powers can do anything. Lights flicker होती हैं, शब्द खुद से play होता है. Recently, my sister की computer पे she'll be driving, it's connected to her phone, and whatever satsang will start playing from her phone, it will be just the message she needs. So Guruji can do anything, and these kinds of things happen all the time. So the shabad that started playing मेरे की was शुक्र करा. गुरुजी ने मुझे पहले भी सिखाया हुआ था शुक्राना के बारे में, that you had given me a dream job that I wanted and I forgot to say thank you. Guruji came in my dream that night and said, शुक्राना भी नहीं कर सकती थी, even though I had brought flowers to satsang. But the expression of gratitude is not the same as saying thank you. Guruji directly had told me शुक्राना भी नहीं कह सकती थी, with a laugh and a joke he was teaching me. और जब ये वक्त आया कि mom is on what seems like a last breath and Shukrana Shabad is playing, Guruji really clearly indicated to me, you have nothing to do but Shukrana, which I took it to mean as he will save her life. But obviously we had to go through the ups and downs of watching her almost die so many times in the weeks and days to come. But it was also clear कि हम एक ICU रूम के बाहर हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको छू नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए. उनकी लाइफ कहने को इज अंडर द डॉक्टर्स वॉच, बट वो डॉक्टर कितना अच्छा है, वो नर्सेस कितनी अच्छी हैं, ऑल दैट मेडिकल स्टाफ, दे आर लेड बाय द डिवाइन हैंड. Millions of people in the same situation, you know, 1 in a million may get that sick. That was Guruji's path. And 1 in a billion would survive where she went and came back. That is Guruji's path. And that is the equation of faith between a guru and his path. So it was so clear to us at that time that we can do nothing. Her life is in God's hands and she has strong faith. जो होना है गुरुजी ने लिखा है, we accept everything. So that gives a kind of peace when we stop struggling and resisting and trying to control things or हाथ पैर मारना, as my mom would say. हमारे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा. We only have to do the bare minimum of what Guruji has asked us to do, or the maximum, our best effort of what Guruji has shown us to do. So हमें हर situation में हर चीज के लिए शुक्राना करना चाहिए. Not just for that situation, because एक शब्द में आपने सुना होगा कि गुरु हमें, भगवान हमें 1000 चीजें देते हैं. हम उन सब का शुक्राना करते रहते तो we would spend our lives. And you know, all the oceans and inks and all will be dried up, but we don't do that. We focus on the one thing that we don't have or that we want. अगर हमारा mind उस एक चीज पे fixated है जो हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए, that is in the Shabad it says भिखारी जैसा mindset, complete lack, कि वो only able to see what we don't have. That is a big scarcity perspective. Rather than seeing the million things you do have, if we are to thank ourselves, for our Guruji, for what we have for ourselves, you know, clean air to breathe, safe shelter every night, someone who cares about us, or many, many people who care about us. And now, pandemic has been so difficult. I know that so many people have lost their lives and are grieving. And may God bring them, you know, closer to God. But at the same time, those satsangs still in-person ho rahe the, there are now millions and billions of people who can connect to Guruji and to satsang, despite, you know, maybe they did not have the physical ability or the health or the resources to make it to a physical satsang. तो महासंगत कनेक्ट हो गई है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं. हमने ग्लोबली इतने सत्संग सुने हैं, ये सब नहीं पॉसिबल था विदाउट सीइंग द ब्लेसिंग इन द क्राइसिस. हर क्राइसिस में कोई ना कोई लेसन होता है, फिर भी कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है. You have to find that blessing, and we can only find it by starting by saying Shukrana Guruji for everything you have given us, and then scanning what is it that I have today that I have received that I did not have yesterday or 5 years ago. If we are always looking forward towards what will happen, that either creates fear, or towards what we don't have, which creates desire and lack. But if we look at the past and we look at the present, we can look at everything we do have. And we can also look at all the problems which are gone away
and all the problems we could have had, which we do not have. So every day that you're breathing an easy breath, especially in a time of climate change, shortage of clean water, forest fires, so many, obviously I don't need to say the corona illness, which has taken and affected millions of lives and breathing, and there's so much sickness and struggle around us. For every little thing, the shukranas are countless. And then, if your parents, your siblings, your children, your loved ones are safe and healthy, if you have a job, if you have work you care about, if you have an income that sustains you and you're capable and contributing to the world, Maha Shukrana. There are endless Shukranas. And even if you are sick and there are people who can care for you, there is a medical system, there are medicines now. Even for COVID now, the vaccination exists.